Find the smallest number which leaves remainders 3 and 4 when divided by 5 and 7 respectively. हमने वैसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इन द फर्स्ट मॉड्यूल कुछ एलसीएम और एचसीएफ मॉडल भी डिस्कस किए हुए हैं, राइट? सो एलसीएम मॉडल में क्या होता है? एलसीएम मॉडल 1 में द रिमाइंडर्स आर सेम. यहाँ पे रिमाइंडर्स सेम है क्या? नहीं. ओके. एलसीएम मॉडल 2 में क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द रिमाइंडर एंड द डिवाइजर्स इज सेम. So 5 minus 3 is 2 and 7 minus 4 is 3, not equal, right? So यहाँ पे हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, right? And that's exactly what we'll see how to solve these questions. The divisors are different, remainders are different, and the distances or the differences are also different, right? Okay. So the question says, guys, when I divide with 5, the remainder is 3. So number should be of the form 5k plus 3. Same way, जब 7 से divide किया, remainder is 4. So number should be of the form 7m plus 4. Right now, what we have to do here is you have to empirically or analytically, थोड़ा जुगाड़ करके in the like आसान भाषा में, we have to calculate the values of k and m such that the equation is satisfied. Okay, so you have to find out the values of k and m such that they satisfy the given equation. Okay, and how do we do that? The first step is we take 3 on the right hand side, we subtract it, so we have 5k is equal to 7m plus n, 7m plus 1. Sorry. Okay, so we have 5k is equal to 7m plus 1. ओके, सो 5 का ऐसा मल्टीपल चाहिए तो 7 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इट विल बी 7 into 2 14 plus 1, which is nothing but 5 into 3, right? So very easily you can figure out k का value as 3 and basically m का value as 2. Okay, अब एक बार आपने k का value 3 या m का value 2 पुट किया, फाइंड कर लिया है. Okay, then you put these values in either of the two. Okay, k का value इस पे पुट कर लो या फिर m का value इस पे पुट कर लो. You will get the required remainder 5 into 3 plus 3 or 7 into 2 plus 4. The answer is 18. As simple as that. Okay, so this is typically called as a Chinese remainder theorem. Okay, and जहां भी ये ऐसा सिनेरियो होगा जहां पे LCM model 1 to apply नहीं हो रहा होगा, we can always apply the Chinese remainder theorem. Let's solve one question based on this, guys. Okay, so find the remainder when 167 raised to 45 is divided by 77. Okay, so the first step, जैसे लास्ट केस में हमने क्या किया था, हमने 5 और 7 में बेसिकली उसको डिवाइड किया था लास्ट क्वेश्चन में. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 77 को ब्रेक करेंगे as a product of two co-primes. Okay, so 77 as a product of two co-primes was 7 into 11. तो हम लोग पहले 7 से रिमाइंडर फाइंड करेंगे और फिर 11 से रिमाइंडर फाइंड करेंगे and then apply Chinese remainder theorem. Okay, so let's start. Remainder of 167 raised to 45 with 11. पहले ये फाइंड करते हैं. Okay, so guys 167 का रिमाइंडर 11 से कितना आएगा? 11 1 is 11 and उसके बाद 11 5 is 55, रिमाइंडर 2 आएगा, right? So it is basically 2 raised to 45 divided by 11. उसका रिमाइंडर हमें चाहिए, right? Now, very simply what we do is we find a multiple of 11 or we find a power of 2 close to a multiple of 11, right? So 2 raised to 5 मेरे ख्याल से होता है guys 32, जो कि 11 के मल्टीपल से एक कम है, 33 से एक कम है 32, right? So we write 45 as 5 into 9, so 2 raised to 45 becomes 2 raised to 5 the whole raised to 9. Okay, अब मैं इसका रिमाइंडर चाहिए with respect to 11. Okay, so 2 raised to 5 is 32, right? And 32 raised to 9, the remainder with 11 will be minus 1 raised to 9. Okay, which is nothing but minus 1. Just add back the divisor, the final remainder is 10. So हमें एक बात मालूम पड़ गई, इसी नंबर को जो भी नंबर होगा अपना उसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे the remainder will be 10. Okay, next remainder of the number with 7, ये थोड़ा easy है. 7 2s basically होता है 14 and उसके बाद हो जाएगा 7 4 28 minus 1 remainder होगा, right? You can just check. If not, I'll just confirm for you guys. 167 divided by 7, 7 2s are 14 and then again 2 यहाँ पे नीचे आएगा, 7 नीचे carry, 7 4s are 28, 27 minus 28, the remainder is minus 1, right? So basically this part is nothing but minus 1 is to 45, okay, which is nothing but minus 1 as such, right? And we know that negative remainder है तो हमें divisor add करना पड़ेगा 7, the remainder is 6. So now it's a typical Chinese remainder theorem question. Okay, 11 से divide किया तो 10 remainder आता है, 7 से divide किया तो 6 remainder आता है, right? Okay, so take 6 on the left hand side. Okay, very easy it will become. So 11k plus 4 is 7 into m. तो 7 का ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 11 के मल्टीपल से बेसिकली 4 ज्यादा हो. Okay, so you can take this as 11 into 1 नहीं होगा 2, 11 3 33, 11 4 is 44, 11 5 is 55, 11 6 is 66. तो यहाँ से m का वैल्यू में मिलता है guys 10. Okay, and k का वैल्यू में मिलता है 6. Right, so you can just put any of these values in the given two equations. Okay, this and this. Okay, and when you do that, you will simply get 11 into 6 plus 10. This is the remainder, or this is the remainder. Okay, this is 7 into 10 plus 6, 76. As simple as that, guys. Okay.